Hello students, today's topic is fixed cost and variable cost. This table presents cost data on Caroline's neighbor, that is Conrad's coffee shop. The first column of the table shows the number of cups of coffee that Conrad might produce ranging from 0 to 10 cups per hour. तो जो फर्स्ट कॉलम है आप देख सकते हैं क्या शो कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ कॉफी कप्स पर आवर. The second column shows Conrad's total cost of producing the coffee. तो जो second column है ये शो कर रहा है total cost of producing the coffee. And this is the Conrad's total cost curve. Here the quantity of output produced is on the horizontal axis. So this is quantity of output, which is cups of coffee per hour. This we have taken on the horizontal axis, and the total cost it is on the vertical axis. और जो total cost का column था, मतलब जो second column था, that is on the vertical axis. ठीक है, हमने ये जो first two columns हैं, एक तो हो गया आपका quantity of coffee, this column, and this one total cost. इसको हमने plot किया है. So this is on the vertical axis. Okay, and this column is on the horizontal axis. ठीक है, उसके बाद हमने ये पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, जैसे ये कॉम्बिनेशन हो गया, दिस कॉम्बिनेशन. सो वी हैव प्लॉटेड ऑल दीज कॉम्बिनेशंस एंड वी विल गेट दिस टोटल कॉस्ट कर्व, दीज कॉम्बिनेशंस. ओके, जब आप इनको ज्वाइन करोगे आपको क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट कर्व. As you can see in this figure, the total cost curve gets steeper as the quantity of output increases because of diminishing marginal product. और आपको याद होगा जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें ये बात हमने कही थी that as the quantity of output increases, we know that it will generate diminishing marginal product. Okay, so producing an additional cup of coffee will require additional efforts, additional labor, and which will make it more costly. And when we are saying that it will make more costly, that means total cost curve becomes steeper. It will become steeper as Q, which is quantity of output, increases, because this will lead to diminishing marginal product, which means diminishing marginal product of coffee in our case, which means producing additional cup will require additional labor, or you can say additional labor efforts, which will make it costly to produce an additional cup of coffee. So it will become steep. Conrad's total cost can be divided into two types. Some cost called fixed cost do not vary with the quantity of output produced. तो कुछ कॉस्ट होती हैं फिक्स्ड कॉस्ट जो वेरी नहीं करती विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, कि आपने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कॉस्ट तो आपको इंकर करनी ही होगी. सो दैट इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट. दे आर इंकर्ड इवन इफ द फर्म प्रोड्यूसेस नथिंग एट ऑल. तो ये तब भी होंगी इवन इफ द फर्म प्रोड्यूसेस नथिंग एट ऑल, अगर फर्म ने कुछ प्रोड्यूस नहीं भी किया है
then also, because these are fixed cost, it is not related with the quantity of output produced. Even if the firm has not produced anything, then also this will be incurred. So Conrad's fixed cost include any rent he pays. मान लो कि अब Conrad जो है वो कोई rent पे कर रहा है, so this cost is same regardless of how much coffee he produces. तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितने कप कॉफी के प्रोड्यूस किए हैं, रेंट तो उसको उतना पे करना ही होगा. सो दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट. Similarly, if Conrad needs to hire a full-time bookkeeper to pay bills regardless of the quantity of coffee produced, the bookkeeper salary is a fixed cost. तो again ये भी एक example fixed cost का ही है कि अगर Conrad ने hire किया है कोई full-time bookkeeper, right, to pay the bills, अब वो bookkeeper को जो salary मिल रही है, that is a fixed cost because it is not related with the quantity of coffee produced. उससे क्या ही फर्क पड़ता है कि उसने कितने कप जो है कॉफी के वो प्रोड्यूस किए हैं, बिकॉज बुक कीपर की जो सैलरी है वो एक फिक्स कॉस्ट है, वो उसको अपनी पे करनी ही होगी. The third column in table 2 show Conrad's fixed cost, which in this example is $3. तो हमने अपने एग्जांपल में अगर आप देखें तो ये जो थर्ड कॉलम है ये फिक्स कॉस्ट का है. हमने कितनी एज्यूम किया फिक्स कॉस्ट $3. अब आप देखो चाहे क्वांटिटी ऑफ कॉफी कप्स पर आर, चाहे 0 कप हो, 1 कप, 2 कप या 3 कप, ये जितने भी हैं वो फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी. इट इज $3 इन एवरी केस. सो इट इज नॉट रिलेटेड विद द क्वांटिटी ऑफ कॉफी. कितने कप्स प्रोड्यूस किए हैं उससे फर्क नहीं पड़ता. इट विल रिमेन सेम regardless of how much cups of coffee has been produced. Some of the firm's costs are variable cost, which change as the firm alters the quantity of output produced. तो हाँ, अब कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं वेरिएबल कॉस्ट होती हैं जो डेफिनेटली चेंज होंगी एज द फर्म विल चेंज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड. Conrad's variable cost include the cost of coffee beans, milk, sugar, paper cups. Because the more cups of coffee Conrad makes, the more of these items he needs to buy. बात तो सही है. अब जो हमने कॉस्ट देखी है, चाहे भले ही वो कॉफी बीन्स हो, मिल्क हो, शुगर हो या पेपर कप हो, these the cost of these items is related with the quantity of coffee, is related to the cups of coffee produced. बिकॉज जितने ज्यादा आप कप्स ऑफ कॉफी जो है वो कॉन्रेड बनाएगा, द मोर ऑफ दीज आइटम्स ही नीड्स टू बाय. सो नाउ दीज कॉस्ट आर रिलेटेड विद द क्वांटिटी ऑफ कॉफी. Similarly, if Conrad has to hire more workers to make more cups of coffee, the salaries of these workers are variable cost definitely. कि अगर आप मान लो suppose the Conrad is producing 2 cups of coffee, तो ठीक है 2 कप्स के लिए आई थिंक 1 वर्कर इज सफिशिएंट. ओके, तो 1 वर्कर की सैलरी आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि 1 वर्कर की सैलरी सपोज ₹100. ओके, नाउ if Conrad is producing 10 cups of coffee, or you can say okay, so basically he will require 2 worker, so ₹200. So basically what I mean is that if Conrad wants to make more cups of coffee, then Conrad will have to hire more workers, and hiring more workers means that he will have to pay salaries to those extra workers. So salary to the worker is a variable cost which is related to the quantity of coffee. The variable cost is 0 if he produces nothing. It is $0.30 if he produces 1 cup of coffee, $0.80 if he produces 2 cups, and so on. तो आप इस टेबल में आप देख सकते हैं that when Conrad is producing 0 cups of coffee, then variable cost is $0 because कुछ produce ही नहीं किया, right? तो variable cost तो 0 रहेगी. And when he is producing 1 cup, variable cost is $0.3. 2 cups, variable cost is $0.80, $3, $1.50. Okay, and so on. A firm's total cost is the sum of fixed and variable cost. तो ये भी हम देख सकते हैं टेबल में. ये जो है अगर मैं ये if I'll talk about these 3 columns,
So total cost is fixed cost plus variable cost. $3 plus $0 will be equal to $3. $3 plus $0.30, it is equal to $3.30. In the same way, $3 plus $0.80, it is $3.80. So total cost is the sum of fixed cost and variable cost. Okay. So that's all from my side. Thank you.